गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट एम्बर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उन्होंने जनरेशन इंडिया फाउंडेशन और अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर क्लाउड स्किल्स ट्रेनिंग देना शुरू किया है। 1500 जो है आपके जो अप्रेंटिसेस होंगे उनको, और ये प्रोजेक्ट अंबर के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। तो प्रोजेक्ट अंबर है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये खुद भी संकल्प प्रोग्राम जो है उसी के अंदर आता है, और इस प्रोग्राम के अंदर 30,000 यूथ को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी ना किसी तरह के स्किल्स सिखाई जाएंगे, और इस 30,000 में से जो है 50% विमेन होंगी। ठीक है। अगर हम इसके फीचर्स देखें इस प्रोजेक्ट के, लर्नर जो है वो अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो रीस्टार्ट प्रोग्राम है वो सीख कर जाएंगे, और वो अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होंगे, और जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड स्किल्स हैं उनको कवर किए जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी उसके बारे में, और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज उसकी सिखाई जाएंगी जैसे लिनक्स, पाइथन, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, या फिर जो भी उसका डेटाबेस होता है। और ये प्रोग्राम जो है ये कॉस्ट फॉर लर्नर्स भी कवर करेगा, AWS जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन एग्जाम की भी। ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो एंट्री लेवल टैलेंट है उसको वर्क फोर्स में कैसे लाया जाए, उसको ये जो है देखेगा ये पूरा प्रोग्राम, और इंडिविजुअल्स को जो है सक्सेसफुली क्लाउड बेस्ड करियर उनका लॉन्च करने में उनको हेल्प करेगा। अगर हम संकल्प प्रोग्राम के बारे में देखें तो स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर ही आता है। अब इस प्रोजेक्ट का फोकस जो है वो ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरह से इसका फोकस रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खनन प्रहारी ऐप। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मोबाइल ऐप है खनन प्रहारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च की है, ताकि इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। अब इसमें सिटीजन जो होंगे वो इंसिडेंट्स ऑफ कोल इलीगल कोल माइनिंग को रिपोर्ट कर सकेंगे जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। इसको बनाया गया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और CMPDI रांची के साथ मिलकर। ठीक है। अब ये इलीगल कोल माइनिंग को रोकने में गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रमोट करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, और ट्रांसपेरेंट एक्शन कैसे लिया जा सकता है इलीगल माइनिंग में के कंटेक्स्ट में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये उस पर फोकस रखेगा। इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी कि आपकी प्रिवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा कि किसने रिपोर्ट किया है। कंप्लेंट की ट्रैकिंग भी आप कर पाओगे कि आपने जो कंप्लेंट की थी इलीगल माइनिंग की उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंश्योरेंस सेफ्टी बॉन्ड। ये इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि कैसे हम इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको हम कैसे आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स होते क्या, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है। तो इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो है एक प्रिंसिपल के बीच में, एक श्योरिटी के बीच में और ऑब्लाइजी के बीच में। अब इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल समझ लो जो बॉन्ड को परचेज करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं ये कि समझ लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने ये परचेज़ किया ये बॉन्ड, अब इंश्योरेंस कंपनी को मैंने पे किया समझ लो कुछ भी अमाउंट, कि अगर मैं ये पर्टिकुलर जो प्रॉमिस है जो मैं पुल नहीं बना पाया तो आप जो है मेरे बिहाफ पर, इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे श्योरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी, आप मेरे बिहाफ पर ऑब्लाइजी इस केस में गवर्नमेंट भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है जिसके बेसिस पे आपने, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उसको इतने पैसे पे करोगे। ठीक है। तो ऑब्लाइजी वो होता है जिसको ये बेनिफिट मिलेगा अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो। ठीक है। श्योरिटी वो होगी जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस बेच रही है ये। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर इस बॉन्ड को परचेज कर रहा हूँ कि अगर मैं ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा ना कर पाया किसी वजह से, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑब्लाइजी को पैसे देगी। ठीक है। तो इससे होता क्या है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन गया ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कि अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाया तो उस केस में जो है ऑब्लाइजी का नुकसान नहीं होगा, उसको जो है ये पैसा मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है
वो भी सिक्योर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की भी कमाई हो गई, क्योंकि बहुत ही कम चांस होगा कि जो है ऐसा डिफ़ॉल्ट होगा। ऑब्लाइजी को भी फ़ायदा हो गया कि वो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट भी अगर हम सोचें तो गवर्नमेंट अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो उसको श्योरिटी रहेगी कि हाँ हमारे पास पैसा आएगा अगर ये जो है पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया तो, ठीक है, तो मतलब नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीका वायरस, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मुंबई में पहला जीका वायरस का एक केस रिपोर्ट किया गया है बीएमसी द्वारा। एक मस्कीटो बॉर्न वायरस होता है ये। जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा में 1947 में इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। ह्यूमंस में एक इन्फेक्टेड एडिस अजिप्शी मस्कीटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड मदर से उसकी बेबी को जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स कई बार तो इसके नहीं आते हैं, लेकिन जब आते भी हैं तो माइल्ड और सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे फीवर, रैश, जॉइंट पेन, मसल पेन, रेड आइज एट्सेट्रा। सिम्टम्स जनरली इस 2 से 7 दिन के बाद आते हैं जब मस्कीटो की बाइट होती है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं प्रेग्नेंट वीमेन और उनके बेबीज़ के लिए। बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, माइक्रोसेफेली, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं बेबी में, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है अभी तक, तो इसका जो है बेसिकली सपोर्टिव थेरेपी ही दी जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो चेयर प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु में, उन्होंने कहा है कि जो NIAS है वो एक पायलट प्रोजेक्ट बना रही है जिससे कि जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हम सिटी की एयर क्वालिटी को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। तो जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसमें बेसिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो जियो स्पेशल डेटा के साथ, साइंस के साथ, और इसमें होता क्या है कि जो है लोगों को आप जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अपने जो है उस पर्टिकुलर एरिया का जो है डेटा उपलब्ध कराएं, ठीक है। लोग अपने रियल टाइम फीडबैक दे सकेंगे कि उनके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, ट्रैफिक कंजेशन कितना है, पीक आवर्स में कितना ट्रैफिक है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लो, मॉडरेट, डेंस, जो भी रेटिंग वो देंगे उसके बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक मैप तैयार करेगा, जियो स्पेशल मैप तैयार करेगा, और उससे हम जो है सिटी की एयर क्वालिटी किस एरिया में ख़राब चल रही है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते करते हुए हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। सिचुएशनल अवेयरनेस जो है अच्छी रहेगी, लोग किस तरह का डेटा फीड कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी है उस डेटा में, कोई फॉल्स डेटा तो नहीं जो है इनपुट दे रहा है, उसको पकड़ना भी आसानी से हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में भी जो है ये लोकेशनल इंटेलिजेंस भी आएगी इसमें, जब आप जियो स्पेशल डेटा भी यूज़ करोगे तो उससे जो है डेटा जो है वो रियल वर्ल्ड अवेयरनेस उसकी अच्छी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुजीवाड़ा इफेक्ट। तो एनीवेज पहले तो हम ये भी देख लेते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। रैंडम फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी होती है कि जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है मल्टीपल डेटा आउटपुट्स को जो है वो कंबाइन करके एक रिजल्ट पर पहुंचने में, ठीक है। तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा जो है कई तरह के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बेसिस पर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट। ये भी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पावरफुल विंड्स जो हैं उन्होंने बे एरिया और जो सेंट्रल और सदर्न कैलिफोर्निया का एरिया है उसको एक तरह से इफेक्ट दिया है, जिससे कि पावर सप्लाई जो है फुजीवाड़ा इफेक्ट की वजह से जो है वो डिसरप्ट हुई है कैलिफोर्निया रीजन में, ठीक है। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, फुजीवाड़ा इफेक्ट क्या होता है? फुजीवाड़ा इफेक्ट में होता है कि जो 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो एक ही टाइम पर अगर सेम ओशन रीजन में है और उनका आपस का डिस्टेंस 1400 किलोमीटर से कम है तो उनमें क्या इंटरेक्शन होगा उसको हम फुजीवाड़ा इफेक्ट कहते हैं। और इसमें 5 तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। पहला तो इलास्टिक इंटरेक्शन, जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टॉर्म्स है सिर्फ वही चेंज हो रही है, ठीक है। ये सबसे कॉमन है। ये जब 2 स्टॉर्म्स 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस से कम रह जाती हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायरेक्शन ही जो है इफेक्ट उस पर चेंज आता है। दूसरी होती है पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, मतलब कि जो स्मॉल स्टॉर्म है वो एटमॉस्फेयर में गुम हो गई, जो बड़ी स्टॉर्म थी उसकी वजह से वो स्ट्रेन हो गई। थर्ड होता है कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट, जिसमें स्मॉल स्टॉर्म जो है वो कंप्लीटली ही खत्म हो गई, एटमॉस्फेयर में सिर्फ जो बड़ी स्टॉर्म थी वो ही रह गई। चौथा होता है पार्शियल मर्जर, जिसमें स्मॉल स्टॉर्म जो है वो मर्ज हो जाती है बिगर बिगर स्टॉर्म के अंदर। फिफ्थ होता है कंप्लीट मर्जर, मतलब दोनों की दोनों स्टॉर्म जो सिमिलर स्ट्रेंथ की थी वो आपस में मिल गई और एक बड़ी स्टॉर्म बन गई,
ठीक है। फुजीवारा इफेक्ट को साकुही फुजीवारा जो है एक जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने पहली बार जो है 1921 में आइडेंटिफाई किया था, उन्हीं के नाम पर इसको हम फुजीवारा इफेक्ट को कहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Project Amber. This topic is important for your governance section. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has recently entered into collaboration with General India Foundation and Amazon Web Services to provide cloud skills training to 1500 trainees or apprentices under Project Amber. So what is Project Amber? Amber is Accelerated Mission for Better Employment and Retention Project, and it's a joint initiative of National Skill Development Corporation under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So this initiative itself is part of the Sankalp program of MSDE. Okay, and the aim is to give training to 30,000 youth, 50% of whom will be women. Okay, so what are the features of this project? So the learners will take part in the Amazon Web Services Restart program, which is the workforce development program for unemployed and underemployed individuals. It will cover the fundamental Amazon Web Services cloud skills as well as practical career tips. And these trainees will be trained in multiple technologies like Linux, Python, networking, security, and relational databases. And this program will also cover the cost for learners to take the Amazon Web Services Cloud Practitioner Certification exam. Okay, so basically the significance is that it will bring entry-level talent into the workforce, and it will also help individuals to launch their successful cloud careers, which is of course the future in our modern technology. So what is Sankalp program? So Sankalp program is skills acquisition and knowledge awareness for livelihoods program, a promotion program, which was launched in 2018 as part of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship's National Skill Development Mission. And the aim, of course, is to transform the overall skilling ecosystem of the country. Okay, and it's a World Bank assisted program. So the next topic is Khanan Prahari app. This topic is important for your governance section. So this Khanan Prahari app has been launched recently by the Ministry of Coal to curb illegal coal mining activities in the country. Okay, so this will allow citizens to report incidents of illegal coal mining through geotagged photographs and textual information. So this will be generated or developed in association with Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geoinformatics based in Gandhinagar and the CMPDI Ranchi. Okay, so what is the objective? Of course, the objective is to report about illegal coal mining. Government will take transparent action against illegal mining using space technology and e-governance initiatives. Okay, so what are the key features of this app? So of course, the first is to that people would be able to report these incidents and their name would be kept confidential to ensure privacy and security of these people who are reporting these incidents. Then there will be complaint tracking also. Whatever you will be complaining, there would be a number would be generated and you would be able to track the status of your reported complaints on the Khanan Prahari mobile app. Okay. So the next topic is insurance safety bonds. This topic is important for your economy section. Recently, National Highways Authority of India has organized a brainstorming session with stakeholders to expedite the adoption of insurance surety bonds for its contracts. So these insurance surety bonds are basically written agreements to guarantee compliance, payment, or performance of an act. So like I was telling you earlier with an example that insurance companies act as surety and they provide financial guarantee to the contractor that they will be that this contractor would fulfill its obligation as per the agreed terms. So for example, I am a contractor. In this case, I would be the principal, and I have purchased this bond from an insurance company who is the surety, and I have said that yes, I would complete this project or infrastructure project, but in case due to some issues, if I am unable to complete this project, then the obligee, let's suppose that this is a government, in our case a state government, who has given me a contract to build a bridge on the highway. In case I fail to fulfill this obligation or my contractual obligation, then this insurance company from whom I have purchased this bond or from whom I have purchased this insurance company would pay the state government because of the losses that they have suffered because I have not been able to fulfill my contractual obligation. So the insurance company, of course, would get hold of my assets in case of my default or whatever
the terms and conditions would be. But by this case, the obligee, let's suppose that in this case the state government, or let's suppose a central government or any other person who has given this contract, would be sure that in case this project does not gets completed, I would not suffer loss because the insurance company would anyway pay to me. Okay, so this also gives assurance to principal, the person or the contractor, that in case I fail to undertake an obligation, or if circumstances arise, then I would not have to pay money from my own pocket. Then the insurance company would be taking care of it. Okay, so these are the advantages. Also, it acts as a security arrangement for infrastructure projects, and it insulates the contractor as well as the principal both. Okay, so this product gives the principal a contract of guarantee that contractual terms and other business deals will be concluded in accordance with the mutually agreed terms. And in case the contractor doesn't fulfill the contractual terms, the principal can raise a claim on the surety bond and recover the losses that they have incurred. Okay, so this is basically a bank guarantee. It's a kind of a surety bond, unlike a bank guarantee, and it does not require any large collateral from the contractor. Okay, unlike if a bank is giving guarantee on behalf of the contractor, then the bank would of course take some amount of collateral on behalf of from the contractor. Okay, in this case, surety bond insurance, there is no need of any collateral. Okay, so the next topic is Zika virus. This topic is important for your social issues. So Mumbai has recently reported the first case of Zika virus, and it has been confirmed by BMC. So this is a mosquito-borne virus, and it was first identified in Zika forest of Uganda in 1947, and it is primarily transmitted to humans through the bite of an infected Aedes aegypti mosquito, and it spreads through sexual contact, blood transfusion, and even infected from an infected mother to her baby during pregnancy or childbirth. So generally the symptoms do not arise. People do not experience any symptoms. But once the symptoms occur, they are often mild, and it includes fever, rash, joint pain, muscle pain, headache, and red eyes, conjunctivitis. And these symptoms also appear 2 to 7 days after being bitten by that infected mosquito. Okay, so what are the complications? There could be severe consequences for pregnant women and their babies, and there is currently no specific treatment available for Zika virus infection or disease. So generally, supportive care therapy is given only. Okay. So the next topic is geospatial artificial intelligence. This topic is important for your science and tech section. So recently, ISRO chair professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, has informed that NIAS has launched a pilot project which would involve geospatial artificial intelligence and random forest technology to monitor and predict the city's air quality. So what is geospatial artificial intelligence? Basically, you are using artificial intelligence with geospatial data, science and technology to accelerate real world understanding of the city's air quality. How it would be done? So people would be able to give real-time feedback about the conditions in their surroundings using a smartphone application. For example, what is the extent of traffic congestion? What are the peak hours? How has been their experience? They would be giving the ratings according to that. So this data would be then collated, and it would be sorted by the artificial intelligence technology, and it would be analyzed, and based upon that, accurate and precise monitoring models would be prepared. Okay. Why is Geo AI important? Because it would improve data quality, consistency and accuracy. Okay, and because this data is streamlined by artificial intelligence, there would be less chance of mistakes. Also, this would accelerate the situational awareness. Okay, it would provide real-time data, and it would bring locational intelligence also into our decision making. So we would be able to identify that which are those choke points in our cities which are having traffic congestion, and where there is issue of this air pollution. We would be able to take decisions based upon that. Okay, then what is random forest technology? So it is a commonly used machine learning algorithm in which multiple data outputs are combined to arrive at a result. And researchers generally use historical data collected from various air quality monitoring stations in a city, and then apply the same to predict air quality index. Okay,
So the next topic is Fujiwara effect. This topic is important for your environment section. Recently, powerful winds tormented the Bay Area and other parts of Central and Southern California, and they have these winds have uprooted trees and disrupted the power supply due to these Fujiwara effect. So what is this Fujiwara effect? So it is any interaction between tropical storms which are formed in the same ocean region at the same time within a distance of 1400 kilometers. Then what happens? There are five different ways this Fujiwara effect can take place. First, of course, is the elastic interaction, in which only the direction of the motion of these storms gets changed. Okay. The second one is the partial straining out, in which part of the smaller storm is lost to the atmosphere. Then the third one is the complete straining out, in which the smaller storm is completely lost to the atmosphere. Okay. And the fourth type is the partial merger, in which the smaller storm gets merged into the bigger one. The fifth one is the complete merger, in which the two storms having same strength, they merge and they become just one big storm. Okay. So this Fujiwara effect was first identified by Sakuhi Fujiwara in 1921, and he was a Japanese meteorologist who recognized this Fujiwara cases in 1921. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.